Hello, my dear students. Good morning. Today, I'm going to teach you class 8th English reader. As you can see on your screen, this is the class 8th English reader. This is the class 8th English reader, and chapter number first, last piece today I will teach you. In this way, I will conclude your story. You can say I will complete your story, and then you can understand the complete story that what is given in this chapter. And a letter to God, the chapter is very important, and I have told you lots of things about this chapter, that there is a farmer in this chapter and how all his crops destroyed in hailstorms, and after that he want to help from God. So this is the reason he writes a letter to God, so that God can help him, because he has deep faith in God. And after that, what happens, you will know through this paragraph. So come, let's look over here and see the lines and understand the things that is given over here. Okay, so you can say believe. Which kind of belief? You can see from here, believe to hope with confidence, that he knows how to hope with, starting up a correspondence with God. Starting up with a correspondence with God. So he says believe, it means such type of belief he has, such type of belief he has, you can say, in God, that he want to help from God. He want to help from God. So believe, he hope with the confidence that, and through this, or you can say through such kind of belief, such kind of confidence, he writes a letter. He demanded for the help. So hope with the confidence that he knows how to hope with, कि हमको किस तरह से होप रखनी चाहिए टुवर्ड्स द गॉड, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, एंड he had such type of belief towards God that he want to correspondence with God. वह ईश्वर से बात करना चाहता है through the letters, through the medium of letters. In this way he want to, you can say, correspondence. He want to talk to God, and he want to demanded some help from God. Okay, and after that what happens? So in order to disillusion, so in order to disillusion, इस disillusion में, इस निराशा भरे पल में, what he wanted, so in order not to disillusion that prodigy of faith revealed by a letter that could not be delivered, the postmasters came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, he was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. But what happens over here? You can see, so in order to disillusion, यानी इस भ्रम को दूर करने के लिए उसका, so that he cannot lose his faith towards God, a letter that could not be delivered, जो लेटर को भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि वह किस प्लेस पर भेजेगा उसको? अब उसने तो केवल एड्रेस गॉड का लिख दिया था, यानी ओनली टू गॉड. So to God means where he will send the letters, and suppose when he will not find the answers of this letter, he will lose his faith towards God. And so this was the reason, you can say, the postman was a very kind-hearted man, and this was the reason he decided to post the letter. It means he decided to answer the letter. So revealed by a letter that could not be delivered, he, you can say, the postmaster came up with an idea. It means the postmaster came up with an idea. उसके दिमाग में एक बात आती है, answer the letter. He want to answer the letter. और कौन सी आइडिया उसके दिमाग में आती है? वह उस लेटर का रिप्लाई करना चाहता है. बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह उसको ओपन करता है, देन ही फाइंड आउट दैट, व्हेन ही opened it, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, कि उस लेटर को रिप्लाई करने के लिए उसको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, इन स्पाइट ऑफ पेन एंड पेपर. Okay, but when he opened it, he was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck his decision and asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and after that, he himself gave
1 minute. What happened? Yes. Answer to needed something more than goodwill, and but he stuck on his resolution. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees, and you can say he demanded money from employees, some other employees who were there. He himself gave a part of salary, and he also gave a part of his salary, and several friends of he was obliged to give something for an act of charity. And in this way, he takes money to his friends also, to his employees also, and he himself gave a part of his salary and collected money. Okay, because when after reading the letter he find out that he has needed something more than goodwill. It means when he read the letter, he find out that to reply this answer he needed some money also. And after that, next paragraph, you can say it was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by Lencho. और उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा था कि वह उस 100 pesos को जितना उसने डिमांड किया था, how much he demanded for 100 pesos, so it was, you can say, impossible to collect him lonely. उसके लिए अकेले इतना इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था. So Lenche, so he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह क्या करता है, he able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वह केवल more than half send करता है. He put the bills in an envelope, वह बिल को एक इन्वेलप में पुट करता है, एड्रेस टू लेंचो, एंड विद देम a लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिग्नेचर ऑफ गॉड. और उस गॉड, केवल उस लेटर पे सिग्नेचर क्या किया जाता है, टू गॉड, यानी कि गॉड की तरफ से भेजा गया है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर. और नेक्स्ट संडे को लेंचो वहाँ पे आता है, एंड ही आस्क्ड about that letter that any reply has came or not, if there a letter for him, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया हुआ है. In this way he asked, and it was the postman himself who handed letter. अब postman खुद उसको रिप्लाई करता है, लेटर को देता है, because you know there were no any reply came. He has written himself and he has collected the money himself, and after that he himself handed the letter to that farmer. So it was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who was performed a good deed. इस तरह से उनको, उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन का भाव आ रहा था, उनके अंदर वे बहुत सेटिस्फाइड थे. वाई ही वॉज ओवर हियर सेटिस्फाइड, बिकॉज यू कैन से ही हैज़ डन एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि उन्होंने एक किसी की हेल्प की थी ओवर हियर. सो दिस वॉज द रीज़न ही वॉज वेरी कॉन्टेंटमेंट ओवर हियर, यानी वह किसी की हेल्प करके बहुत ही क्या थे, सेटिस्फाइड थे, बहुत ही सेटिस्फाइड थे. ओके, सो कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड looked on from the doorway of his office. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the bills. और जब उसको पैसा मिलता है, suppose when he find the money at that time, from here you can say contentment of man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. Lancho showed, over here you can see that Lancho showed not the slightest surprise. Lancho थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता उस बिल को देखकर, थोड़ा सा भी वह सरप्राइज नहीं होता है. Why he is not being surprised to seeing the bills? Lancho showed not the slightest surprise on seeing the bills. It means, you know, why over here he was not being surprised, because you know he has complete faith on God, क्योंकि उसको ईश्वर के ऊपर भरोसा था कि ईश्वर उसको निश्चित रूप से पैसा भेजेगा. ओके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका क्या था, कॉन्फिडेंस था टुवर्ड्स गॉड. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह पैसे को काउंट करता है, एट दैट टाइम ही बिकम एंग्री, वह क्या होता है, नाराज हो जाता है. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी जब वह पैसे को काउंट करता है, देन यू नो it was not 100 pesos, so he become angry. God could not have made a mistake, nor could he give denied Lencho that he had requested. और वह कहता है
कि ईश्वर कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। ईश्वर वेरी फर्स्ट ही सेज दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड नेवर कैन मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक। इट मीन्स ही सेज दैट ईश्वर कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता कि उसके लिए पूरा पैसा न भेजे। नार कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न तो लैंचो के रिक्वेस्ट को वह डिनाई ही कर सकता है। इन दिस वे after that he once again decided to write another letter. So listen what happens after that in the next paragraph. Okay, I'm going to teach you this paragraph. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. और जल्द ही वह तुरंत जाता है और वहाँ से पेपर और इंक लेता है। पेपर ins you can say paper and pen. So immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brows. और फिर उसी पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है and he wanted to start once again to write another letter, and at that time he was thinking deeply. You can see a word over here, wrinkling of his brow. What is wrinkling of his brow? यानी अपने वह कहने के बाद दिमाग पे जब जोर देता है तो जैसे हम बहुत सोचते हैं तो हमारे फोरहेड पे क्या होता है, रिंकल्स पड़ जाती हैं। इन द सेम वे ही वॉज थिंकिंग डीपली, ही वॉज थिंकिंग डीपली एंड रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। इस तरह से उसकी जो भौहें होती हैं वहाँ पे रिंकल्स हो जाते हैं। कास्ड बाय द इफर्ट, यू कैन से कास्ड बाय द इफर्ट, caused by the effort he had to make to explain his ideas. It means over here he want to explain those ideas that he is writing in his letter, and in this way he was thinking deeply, and this was the reason you can say we can find some wrinkles on his brows. Okay, after that what happens, he went to the window to buy a stamp. At last he went to the window to buy a stamp, क्योंकि किसी भी लेटर को पोस्ट करने के लिए उस पर स्टाम्प लगाना नेसेसरी होता है। which he licked up and affixed to the envelope with a blow of his fist, जिसको वह उस अपने लेटर पर, अपने एनवलप पर लिक्ड कर देता है, चिपका देता है, फिक्स कर देता है। एंड आफ्टर दैट ही यूज्ड हिज फिस्ट आल्सो। जैसे होता है ना, हम किसी जब चीज़ को या सपोज कीजिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो को चिपकाते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, अपने कहने का मतलब फिस्ट से उसको प्रेस करते हैं। द सेम वे ही आल्सो डज ओवर देयर। ओके, व्हेन ही फाइंड्स ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प विच ही licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment, उसी समय, तत्काल, just right then, that the letter fell into the mailbox. जैसे ही उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में फेल कर देता है, गिरा देता है, postmaster went to open it. तो सॉरी, पोस्टमास्टर क्या करता है, वेंट टू ओपन इट, जस्ट देन ही गोज ओवर देयर टू ओपन इट। इट सेट मीन्स उस लेटर्स में क्या लिखा हुआ था, यू विल गो थ्रू द लाइन्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही हैज़ रिटन when he write the second time that letter. And this is very important line he has written over there, you can understand from here. So listen, postmaster went to open it. Postmaster went to open it. It said, it means who said, you can say it means that you can say that later said, it said God of money that I asked for only 70 pesos reached me. उसने बताया कि हे ईश्वर, मैंने जो आपसे पैसे की डिमांड की थी, गॉड ऑफ द मनी that I asked, it means he very first said to God that God of the money that I asked, कि हे ईश्वर, पैसा, वो पैसा जो मैंने आपसे डिमांड किया हुआ था, मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, उसमें से केवल 70 pesos reached me. How much money reached only? You can say 70 pesos. Over here you can see only 70 pesos reached me. केवल उसमें से 70 पैसे, it means you can say pesos in those days amount of money, unit of money. So 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. इसलिए rest money you must send me
अगेन बिकॉज सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इस पैसे की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इस पैसे को मेल के ज़रिए मत भेजना, इस पैसे को आप मेल के ज़रिए मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। वह कहता क्या है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के इम्प्लाइज हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, धोखेबाजों के झुंड हैं। क्या हैं? बहुत ही धोखेबाज हैं। दिस इज द रीजन ही सेज दैट वंस अगेन when you will send the money to me you will not send the money by mail। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि वही पोस्ट ऑफिस के लोगों ने या पोस्ट मास्टर ने खुद इतना मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, और इसका इस तरह का यहाँ मेन मैटर ये नहीं है कि वह उन एम्प्लॉइज को कह रहा है बंच ऑफ क्रोक्स। ओवर हियर द मेन मैटर इज दैट विच काइंड ऑफ बिलीव ही हैज़ टुवर्ड्स गॉड, उसको ईश्वर में कितना विश्वास है कि ईश्वर ने उसके लिए खुद पैसा भेजा है। दिस इज द रीजन व्हेन ही फाइंड द लेस मनी सो ही सेज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, ये पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर हैं, ये सभी क्या हैं? बंच ऑफ क्रोक्स हैं, धोखेबाजों के झुंड हैं। So I hope you have understood complete chapter over here, because I have taught you this first chapter completely, and after that I will provide its solve exercises and question answer. So don't worry about this, and you will read this chapter carefully, and you know this is the very important chapter, and you know this chapter in class 10th first chapter also given over there. So if you will read here in class 10th you will find lots of help. Okay, and after that thank you for listening this video, and I will suggest you that you just stay your home, and you will not go out of your house, and you will live there, and you will study properly. Thank you.